करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंजाब तो निखिल। सो गाइस, आज मैं अपनी बाइक में लगाने वाला हूँ ये RD 350 का हैंडल। और ये नॉर्मल जो 350 का हैंडल आता है वैसे ही है, बस इसमें से ये वाली ना रॉड लगी होती है, तो ये होती है वाइब्रेशन रोकने के लिए। तो काफ़ी बढ़िया हैंडल है। बाकी मैं आपको लगा के बताता हूँ कि किस तरह से लगेगा ये। तो इसकी जो हाइट वगैरह है वो आएगी कुछ यहाँ पे ऐसे, लुक एट दिस यार। तो लगने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। तो I'm just waiting for the fight, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. सो गाइस, ऊपर वाले पेज मैंने खोले हैं 17 नंबर की की से, और जो ये वाले हैं ना, ये वाले खुले हैं 13 नंबर की की से। इसका जो नीचे वाला पेज था वो भी बाहर आ गया है, बट कोई बात नहीं, मैं उसे लगा दूंगा दोबारा। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अनइंस्टॉल करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होंगी। But I hate that I never really know if I should stay or be alone. If I should stay or be alone. If I should stay or be alone. I don't wanna be alone tonight. I'm just hoping that you'll be just right. And I hate that I never really know if I should stay or be alone. सो गाइज़, ये देखिए मैंने अपने पुराने वाला हैंडल निकाल लिया है। काफ़ी बढ़िया था ये भी। तो अब यहाँ पे फिट करूँगा मैं अपना न्यू हैंडल। I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us.
सो गाइस अब हमें हैंडल में करनी होगी ड्रिलिंग ताकि जो हमारा स्विच है उसका लॉक आसानी से लग जाए। तो ये देखिए पहले मैंने निशान लगा लिया है। और गाइस इसमें जो यूज़ होगा ना वो लोहे का बिट यूज़ होगा, मतलब कि जो ड्रिलिंग के लिए यूज़ होता है ना वो लोहे का अलग आता है। तो नॉर्मल वाले से मत करना, लोहे का लेकर आना और उसके बाद उससे करना। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें करनी होगी ड्रिलिंग और अब हमारा जो स्विच है वो आसानी से फिट हो जाएगा। और गाइस ये देखिए जो हमारा होल है वो अच्छे तरह से हो चुका है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये देखिए कम से कम इतना होल तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्विच का लॉक होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो उसके लिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और ये देखिए काफ़ी सफाई से अच्छे तरीके से हो चुका है। और गाइस ये देखिए अब हम इसमें फ़िट करेंगे अपना स्विच। तो ये देखिए जो हमारा स्विच है कम्प्लीटली फ़िट हो गया है इसमें, और होल भी पूरा बराबर था। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जो मेरा हैंडल है वो प्रॉपरली हो चुका है फिट। लुकिंग है काफ़ी बढ़िया आ रही है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये हैंडल है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और इसमें जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी इजी है, और जो मेरा सिटिंग पोस्चर है वो भी बहुत बढ़िया है।